Friends, good morning. Today I am going to learn class 5 moral value. Contents of this book. Serial number first, lesson, initiative for good cases. Initiative for good cause. Once upon a time, एक समय की बात है. There was a very noble ruler named Bikrampal. He had huge kingdom, but most of the peoples of his kingdom were very lazy. They were all dependent on others for their work, and they lacked initiative. The king always wanted them to be hardworking. एक समय की बात है, एक राजा था विक्रमपाल. वहाँ का राजा तो बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ के लोग जो थे बड़ा लेजी थे. ठीक है, वो हमेशा काम एक दूसरे पे भी डिपेंडेंट करके रहते थे. और राजा क्या चाहता था कि हार्ड वर्किंग हो. ही डिसाइडेड टू जनरेट अवेयरनेस एमंग द पीपुल ऑफ हिज किंगडम. वो डिसाइड किया कि चलो हम लोग अवेयरनेस को जनरेट करते हैं. द किंग मेड अ प्लान एंड टू एग्जीक्यूट इट. एक प्लान बनाया और उसे अब करवाने का सोचा. ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू कीप अ वेरी हैवी स्टोन एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द मेन रोड. मेन रोड के सेंटर में एक बड़ा सा स्टोन रखवाने का काम किया. देन ही हिमसेल्फ hid behind a tree to see if anyone takes the initiative to keep it aside. The first visitor who came there was a carpenter. तो पहला आदमी जो था वो कौन था? कारपेंटर. He was in hurry, so he quarreled with that stone. He fell on the ground and hurt himself badly. He carried in a great pain. He went away blaming the king and his entire staff for not keeping aside the stone. वो पत्थर से कारपेंटर टकराया, वो दूर जाके गिरा भी और उसको चोट भी आया. तो किसको दोष दिया? राजा को, है ना. आफ्टर दिस इंसिडेंट रामकृष्णा, द रिचेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द किंगडम, वाज पासिंग दैट वे. अब एक उसके बाद रामकृष्णा आया और उस बिजनेसमैन था जो एक धनी बिजनेसमैन था. ठीक है, अब वो पास किया वहां से. वाइल गोइंग टूवर्ड्स हिज वर्क, सडनली द कार्ट ड्राइवर स्टॉप द कार एंड रामकृष्ण आस्क्ड द कार ड्राइवर. तो वो अपने कार ड्राइवर से जा रहा था. कार ड्राइवर उसका अचानक से गाड़ी को रोक दिया. उन्होंने पूछा कार ड्राइवर से, वाई हैव यू स्टॉप द कार? द कार ड्राइवर रिप्लाइड जेंटली, सर, a huge stone is lying in the center of the road. एक बड़ा सा पत्थर रोड पे है. So we should follow a different path. So हम लोगों को दूसरा रास्ता पकड़ना चाहिए. The businessman became furious and angry at this. वहाँ पे गुस्सा किया वो. He too blamed his king. और वो अपना राजा को फिर वहाँ पे दोषी ठहराया. And the entire staff and the car driver followed a different path and went away. और फिर वो दूसरा रास्ता पकड़ के चला गया. द किंग वॉज वॉचिंग वेरी केयरफुली. राजा उसको बहुत ध्यान से देख रहा था. एट लास्ट, आखिर में, अ स्मॉल बॉय केम देयर. एक छोटा बच्चा वहां आया. आफ्टर सीइंग द बिग स्टोन, ही ट्राई हिज बेस्ट टू रिमूव इट. वो कोशिश करने लगा इसको हटाने का. ही सक्सेड इन मूविंग इट अ लिटिल डिस्टेंस बिकॉज द स्टोन वॉज वेरी बिग एंड हेवी. तो वो कुछ दूर उसको हटा पाया क्योंकि वो काफी बड़ा और भारी था. बट द स्मॉल बॉय वॉज नॉट डिसरेंटेड एंड ही ट्राई कंटिन्यूसली. लेकिन वो हार नहीं माना और लगातार वो काम करता रहा. आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ द कंटिन्यूस एफर्ट, ही सक्सीड इन रिमूविंग द स्टोन. और वो लगातार काम करने की वजह से वो स्टोन को क्या कर पाया? हटा पाया. ही वॉज सरप्राइज टू सी अ स्मॉल
पर्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स ऑन द प्लेस वेयर द स्टोन वाज कीप्ट। जहाँ पे स्टोन रखा हुआ था वहाँ पे वो गोल्ड कॉइन पाया। पर्स मतलब गोल्ड कॉइन उस पर्स पे रखा हुआ था। इन द मीन टाइम द किंग केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। जहाँ से वो छुपा हुआ था वो बाहर आ गया। एंड said to him that this purse was rewarded for his work because he had removed the big stone। उसे ये रिवॉर्ड दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने इसको हटाया था। He then wholeheartedly and praised the small boy for his wonderful initiative। And on the following day, the king called the boy to his royal court and honored him at public places for his fair deed। All peoples know felt that they should never blaming other peoples for any problem that happened to them। They single-mindedly assured the king that they honored they would be hardworking in the future। So let's give a thought. What did learn? Do you like the king's plan to make people aware that they should be hardworking? Do you like the nature of Ramakrishna? And blaming others for their own problems is the bad habit? Now keep in mind, we are responsible for our work and we should always take initiative to do right thing. Initiations is not bound by age. We should not depend on other for our work. You can do work exercise in your notebook copy. See, multiple choice questions first. Blank was a very noble ruler. Who was the noble ruler? Bikrampal. The people of his kingdom were very lazy. The king decided to generate awareness, so he made a plan and ordered his servant to keep heavy stone in the center of the main road. The blank made continuously effort to move the heavy stone. The boy. The king always wanted his citizens to be hardworking. Now, write true and false. The businessman Ramkishan requested his car driver to follow a different route. The small boy succeeded in moving the stone. Unfortunately, the king could not reward the small boy. The king was not happy because his citizens were very lazy. The carpenter appreciated the king and his servant. Answer the following questions. Whom did the carpenter blame for his great pain? Did the richest businessman Ramkishan remove the big stone? What was his decision? What lessons have you learned from this story? Why was King Bikrampal not happy with the peoples of his kingdom? Why did Bikrampal order his servant to keep a big stone in the center of the main road? Fill in the blanks with the correct words given below. Ordered, angry, removed, rewarded, not. The small boy blanked the big stone. The small boy removed the big stone. The god blank at the king and his servant. The businessman's blank the car driver go to through the different path. The businessman ordered. The king was happy. The king was not happy. The king blanked the small boy. The king rewarded the small boy. Write a short notes on hard work. Write 5 sentences for any good works you have done in your life in the space given below. You can write in your notebook copy and learn properly and learn. Thank you for watching this video.